अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो सैटरडे वेबिनार शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुस्कान, वन ऑफ द मॉडरेटर ऑफ आईकोड ग्रुप। सो सैटरडे वेबिनार शुरू करने से पहले आईकोड ग्रुप का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। मैम आमना, मुझे आप बता देंगी कि मेरी आवाज़ ठीक है और स्क्रीन भी विजिबल है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है और आपकी आवाज़ भी क्लियर है। आप स्टार्ट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू मैम। सो आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो आईकोड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आईकोड गुरु का मोटो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। आईकोड ग्रुप पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम एक साथ ग्रो करते हैं। सो आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो आईकोड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? आईकोड गुरु पे पर डे 20+ सेशंस रन करवाए जाते हैं स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। एक वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं, 9 PM सैटरडे वेबिनार, और 2 वीकली वर्कशॉप सैटरडे संडे को कंडक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट की लर्निंग के लिए, जिसमें हम लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। सो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल सेशंस आईकोड ग्रुप पे 24/7 कंडक्ट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमें ज्वाइन कर सकें। आईकोड ग्रुप पे फ्री आइट्स, GRE, टोफल, DET, ड्यूलिंगो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और जनरल कोर्सेज, ये तमाम कोर्सेज आईकोड ग्रुप पे 100% फ्री हैं। जिसमें DSA, लीड कोड और इंटरव्यू प्रेप के जो सेशंस हैं आईकोड ग्रुप वो भी कंडक्ट करवाता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस कर सकें। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, जेन AI जैसे एडवांस कोर्सेज भी आईकोड ग्रुप पे कंडक्ट करवाए जाते हैं और ये तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग और ये लाइव होते हैं यूट्यूब पे और इनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब और FB पे मौजूद है। अगर हमारा लाइव क्लास या लाइव सेशन मिस हो जाता है तो हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब और FB से वॉच कर सकते हैं। सो आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं? तो ये एक चंद एक डिस्प्ले है यहाँ पे, जो कि हैं कि 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं आईकोड गुरु के इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। आईकोड गुरु हेल्प आउट करता है अपने स्टूडेंट्स की फुल्ली फंडेड एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली USA। देन लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने में आईकोड गुरु अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं स्टूडेंट्स के, तो डेफिनेटली उनके रेज्यूम में उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आउटशाइन करते हैं, तो उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं मार्केट में। देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, MIT, UC बर्कले, हम सभी ने इनका नाम सुना होगा, Tier 1 यूनिवर्सिटी है USA की। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रेस्टिजियस इवेंट होता है, पजल डे होता है, CS50X, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और आईकोड गुरु के जो टीम्स हैं, जो स्टूडेंट्स की टीम्स हैं, 259 टीम्स ने 9x9 पजल्स सॉल्व करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना जगह बनाई और टॉप 1 रैंक में शामिल हुए बिफोर अमेरिका। देन 240+ मेंटर्स, या फिर हम ये कहें कि सेक्शन लीडर्स, या हमें मौका मिला पढ़ाने का कोडिंग प्लेस इवेंट में, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें हमें एक बेसिक CS106A का कोर्स अलॉट होता है और हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1-to-1 जूम पे पढ़ा रहे होते हैं। देन 3 आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स जो कि MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में स्कॉलरशिप विन की थी, 8000 पार्टिसिपेंट ने ग्लोबली अप्लाई किया, 320 सिलेक्शंस हुई और उसमें से अगेन 3 आईकोड गुरु के स्टूडेंट शामिल थे।
देन 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आई कोड गुरु जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जेम में 2023 में, जो एक हाईलाइटेड न्यूज़ रही है 2023 की। 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन ग्रुप में शामिल हुए अबू धाबी में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। सो ये एक पोस्टर है, एक स्लाइड है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिन्होंने सिक्योर की यूएसए की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, 19 यूनिवर्सिटीज़ में। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान की इन कुछ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो आईकोट गुरु के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बहरिया यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने 2024 में यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुल्ली फंडेड पीएचडी एंड एमएस के एडमिशन प्लस स्कॉलरशिप अचीव किया। और अगर स्कॉलरशिप होल्डर्स की प्रोफाइल की बात की जाए तो सीजीपीए की रेंज 3.1 टू 3.8 के दरमियान, आर्ट्स रेंज 6.5 टू 7.5, किसी की कोई पब्लिकेशन नहीं थी, किसी ने कोई जीआरई नहीं दिया स्टूडेंट्स ने जो आईकोट गुड से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टडी गैप 1 टू 15 ईयर्स का, और दे ऑब्टेन 100% फी वेवर फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1100 टू $3000 पर मंथ, और आईकोट गुरु के किसी स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये एक बार चार्ट है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 2021 टू 25 तक आईकोट गुरु की मेंबर्स किस तरह से ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुए हैं विद दिस इंटरनेशनल अचीवमेंट, जिसमें स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, यूसी बर्कले जैसे नाम शामिल हैं। सो 21 में आईकोट गुरु के प्लेटफॉर्म पे 5000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी थी, और 2025 में स्टूडेंट 50+ के मेंबर्स जो हैं आईकोट गुरु के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। ये एक पाई डायग्राम है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने ग्रैब किए थे 22 से 24 तक। 22 में कायदे आज़म, कायदे अवाम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। देन 23 में यूटी टेक्सला, जीसीयूएफ के स्टूडेंट शामिल हैं, और 24 का डेटा हम प्रीवियस स्लाइड्स पे देख चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और वेबिनार। रजिस्ट्रेशन के लिए यू कैन गो थ्रू icode.guru/join, और एफबी पेज को भी विजिट कर सकते हैं, और आईकोड गुरु के यूट्यूब चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं आज के वेबिनार टाइटल के बारे में। आज का वेबिनार टाइटल है द बैकबोन ऑफ इनोवेशन इनसाइड टुडेज मॉडर्न इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर अरशद हुसैन। और वेबिनार शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल हम अपने स्पीकर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि जो सर अरशद हुसैन है उनकी एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पे उन्होंने अपना बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। देन सर का मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से। और अगर सर के एक्सपीरियंस की बात की जाए, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, तो सर का 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स हमें सर अरशद से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर का जो जर्नी है वो शुरू होती है 1996, 1996, और सर ने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ऑनसेल में वर्क किया। देन ही ज्वाइंड बुक करो एज अ इंजीनियरिंग मैनेजर। सर ने डायरेक्टर के तौर पे प्रोडक्ट ऑफ इंजीनियरिंग डोराडो में काम किया। देन ही सर्व्ड एज अ ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर एट माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे सर का एक्सपीरियंस 11 ईयर्स का है। देन सर ने उबर, लिंक्डइन, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर और हेड ऑफ टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट। और करंटली सर इज़ वर्किंग एज अ डायरेक्टर of technical program and product management at Kupang. So please join me to welcoming Sir Arshad Hussain. Sir, we are very excited for today's webinar. So thank you so much for your time. So let me share off my screen, and yes, sir, over to you. Shukriya Muskan. Bismillah. So let me go ahead and share my screen, and inshallah I will get started. मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर। चलिए, बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेरी प्लीज्ड टू मीट यू ऑल। आज से करीब 2 महीने पहले फैसल अली भाई ने जो है इसके बारे में बताया। वॉज वेरी प्लीज टू हियर कि इस तरह का एफर्ट चल रहा है,
और कई presentations हो चुकी हैं. Inshallah, I hope to learn more about this organization and the work that's been done. बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जो है the successes iCode Guru has had so far. तो चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं. ये आई चोज दिस टॉपिक क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड है. ओवर द लास्ट 20 plus years, I've had the opportunity to build modern internet infrastructure across startups and Microsoft and many other companies. So, inshallah, I hope to share some experiences and उम्मीद है कि जो है you have a lot of questions. I have kept this presentation at a very high level and happy to go into details क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जो है किसकी क्या competence है. So I've kept it at a high level, but happy to go into any details towards the end, inshallah. चलें. Before we get started, I would sort of want to highlight कि जो है ये कई सारी products जो है हम internet products, we live in the world of internet, तो कई सारी products हम जो है daily use करते हैं, from social media to workplace productivity. They have become part and parcel of how we operate in the digital world today. Just to sort of name a few, consumer services, I'm sure all of you use Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, जहाँ पे जो है इस इवेंट की जो है पब्लिसिटी हुई है. यूट्यूब, जूम जो कि हम यूज़ कर रहे हैं. हमारे लिए जो है दिस इज़ जस्ट अ जूम कॉल for I don't know 200 300 people. I don't know how many people are on the call, but if you look at it from the company's point of view, इस तरह की जो है thousands of sessions are happening at a given point in time. तो companies कैसे manage करती हैं इस चीज़ को? Like what do they have in the background that enables them to actually run massive internet operations? Enterprise tools. This presentation is being done using Google Slides, which is part of Google Workspace, Microsoft 365, Adobe Creative Cloud. मुस्कान आपने जो graphic बनाई है, I'm sure you used Adobe's software. Quite impressive. I was actually very pleased to hear कि जो है to see how good a graphic that you'd made. Gaming platforms, we don't think of gaming platforms as internet services, but जब आप Xbox One पे खेलते हैं या PlayStation पे खेलते हैं, there's massive infrastructure behind these that enables gamers to actually engage with each other. And then last but not the least, Gen AI tools. Now we live in the world of using ChatGPT हो गया, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, and a whole bunch of hundreds of other tools that each of us use on a daily basis. So just to kind of give you an understanding of कि इसकी in companies की size क्या है, like what is the scale of these companies? Facebook, when I worked at Facebook, back in 2015 to 2019, उन दिनों Facebook had already reached 2.5 billion users. And I put some rough numbers here. 3 billion monthly active users हैं Facebook के. एंड आप जो है जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपकी जो है एक फ़ोटो या वीडियो है, बट इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दे प्रोसेस मोर देन 5 लाख फोटोज एंड वीडियोस अपलोडेड पर सेकेंड. दिस इज जस्ट अपलोड. फिर उसके बाद hundreds of people view these photos and videos. So, like, how do these companies manage this? And this is what I want to talk about. WhatsApp, right? This has become sort of a de facto tool for all of us. 80% of the world's voice calls today go through WhatsApp's network.
phone, yeah, mobile. You use your mobile device, but WhatsApp has become the mechanism through which people communicate with each other. Right? Similarly, YouTube has 2.7 billion monthly active users. LinkedIn in 2023 reached 1 plus billion users. Right. OpenAI has become the fastest growing uh, uh, product in internet product in the world out today. It will continue to grow. Uber जहाँ पे मैंने काम किया, Uber has 180 million users, riders plus people who order food delivery and stuff like that on a monthly basis. तो अ, आपके फोन पे या आपके जो है कंप्यूटर पे it's just a product, but these companies employ thousands of engineers, right? तो ये engineers करते क्या है, right? The engineers who work on the actual end user product जो आप use करते हैं, it's a, a few hundreds, maybe a couple of thousand, but the majority of the engineers actually work on the platforms and infrastructure in the background, constantly innovating, allowing product teams to ship new features, उसकी रिलायबिलिटी improve कर दी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है कॉन्स्टेंटली स्केल कर रहे हैं to meet this massive growth. Just to give you an idea, मैंने जब फेसबुक में काम किया 2015 to 2019, मैंने जब ज्वाइन किया था फेसबुक had a billion users, and by the time I left Facebook had 2.5 billion users. So how did the company continue to sort of innovate, continuously ship features, and then manage that infrastructure? And then companies still have to, despite all of the innovation, companies have to hold back what they can do. To give you just a quick example, आपके if you use iPhone या फिर Samsung के हाई एंड डिवाइस, 4K वीडियोस जो है 2017 या 2016 में आ चुकी थी, बट फेसबुक कुड नॉट सपोर्ट 4K वीडियोस बीइंग अपलोडेड क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपली कैनॉट हैंडल द आपका जो 4K वीडियो होता है, इट्स मैसिवली larger than file size wise, larger than the 1K video that existed. So despite all the innovation, at the time, YouTube supported 4K video and Facebook did not. And it was a constant criticism of Facebook के जो है 4K videos सपोर्ट नहीं करती. अब करती हैं फेसबुक, बट बैक देन इट वाज नॉट. Just to give you an idea, despite all of this innovation, companies have to hold back new product features क्योंकि जो infrastructures को support नहीं करता. Already introduction हो चुका है मेरा, but just want to sort of give you sort of my perspective. Over the last almost 30 years, no, 25 plus years, because I've taken some breaks in between. मैंने जो है इंडिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की, and then I came here to do my master's, and I chose University of Hawaii क्योंकि उन दिनों mid 90s में University of Hawaii was the pioneer in computer networks. Not very well known, but the first computer network was built at the University of Hawaii. आप में से जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, ख़ासतौर से नेटवर्किंग कोर्सेज आपने की हुई हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा अलोहा नेटवर्क, विच वाज एक्चुअली इन्वेंटेड at University of Hawaii. So that's why I chose University of Hawaii back then. Started off as an engineer. Startups में मैंने काम की, मैं सिलिकॉन वैली में होता हूँ. स्टार्टअप्स में मैंने काम की. कभी मुझे जो है अंदाज़ा नहीं था कि जो मैं बड़ी कंपनी के लिए काम करूँगा. But the opportunity came up to work at Microsoft. And since then, I've had the opportunity to work at Microsoft and Facebook and Uber and LinkedIn.
And Muskan ne mentioned kia Coupang, which is the company where I work right now. I did not put Coupang on this slide because most people do not know Coupang, but Coupang is the largest e-commerce network in Korea, but उनकी engineering team सिलिकॉन वैली में होती है जहाँ पे मैं काम करता हूँ. I just want to give you that introduction before I proceed. So, Chennai, let's get to the core of the discussion today. Um, and how do these companies innovate? And the essence of what these companies do is solid backend infrastructure. Um, Today, infrastructure is very mature, and inshallah, we'll talk about that in a bit. But wanted to call out कि जो है जब when the product engineers are busy building the user-facing features, most engineers are working on the back-end platforms and infrastructure that power these products. Um, and happy to sort of get into the details when you have questions, inshallah. Am I missing any text messages here? Yeah, continue करो मुस्कान. Should I not pay attention to the messages? चल ठीक है, let me continue talking. And the way these companies uh, employ the best engineers in the industry. तो जैसे मैंने Facebook की एग्जांपल दी, uh, 4 साल में the company grew from a billion users to 2.5 billion monthly users. Um, and the way companies do this is they're constantly upgrading their technology stack. ओपन सोर्स सिस्टम्स हो गई, ये कंपनीज जो है अपनी अपनी सिस्टम्स बनाती हैं. कुछ कंपनीज ओपन सोर्स करती हैं, कुछ नहीं करती. Uber, for example, open sources most of their large scale systems that they've built. कोई भी कंपनी जब जो सॉफ्टवेयर बनाती है, if that software is not their core competence, they're willing to share their software with the rest of the world, which is when they open source. But जैसे जो है for those of you who follow blogs, फेसबुक का इंजीनियरिंग ब्लॉग, लिंक्डइन, ऊबर के इस इन कंपनीज के जो इंजीनियरिंग ब्लॉग्स हैं, ज़रूर पढ़ें टू अंडरस्टैंड हाउ दीज कंपनीज ऑपरेट. एंड लॉट मोर टेक्निकल डिटेल देन व्हाट आई कैन डिस्कस टुडे. काफ़ी डिटेल ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, लाइक हाउ दे आर इनोवेटिंग. जैसे Uber has one of the best engineering blogs, and you should all read up on that. Scale, इंटरनेट एट स्केल या इस तरह कुछ नाम है. फेसबुक जो है एनुअल कॉन्फ्रेंस रन करती हैं. नेक्स्ट वीक उनका एनुअल एट स्केल उसका कॉन्फ्रेंस का नाम है. दे पब्लिश ऑल ऑफ देयर टॉक्स. ज़रूर जो है उसको देखें टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कंपनीज, एंड नॉट जस्ट फेसबुक बट अदर कंपनीज एक्चुअली प्रेजेंट देयर एज वेल. एंड my wife would jokingly ask me, मैंने जब काम काम किया फेसबुक में, फेसबुक had 30,000 engineers. तो my wife would sort of jokingly say कि जो है चार चार ही तो जो है products हैं, Facebook, Instagram and WhatsApp. What do 30,000 engineers do? These operations require massive investment in the background to run these things. Like आप जब Uber की राइड लेते हैं या LinkedIn पे कुछ पोस्ट करते हैं, it seamlessly works, but every single interaction is powered by this massive infrastructure in the back end. There are three types of, if you look at, sort of, if you step back, there are three types of sort of large scale infrastructure that you can think of. एक हो गया platform as a service, right? The complete set of all of the infrastructure components in the cloud that one would need to actually build things, right? A good example is Amazon Web Services or Microsoft Azure. These are platforms that are offered as a service.
And the next the second facet of internet services is software as a service कि जो है actual applications that run in the cloud, right, that people use, right? Salesforce, yeah, Microsoft 365, yeah, Google Docs. These are all software as a service. And then infrastructure as a service, this is all of the building blocks that a company needs to run large scale billion user products. And companies like Microsoft and Facebook and LinkedIn and Uber have built their in-house infrastructure. And the reason why this is viewed as infrastructure as a service is at the end of the day, all of the thousands of engineers who are working on the foundational building blocks like compute and storage and networking, who will use them? It is the product engineers in these companies that get to use them. So they are built in such a way that it is easy for product engineers to actually use it so that they don't have to. These are complex systems and they don't have to. A product engineer who's building let's say the LinkedIn application on iOS platform doesn't have to worry about all of the complexities and intricacies of storage and compute. So proper APIs are presented to actually make the software development seamless and also to deploy and operate these services. That's what infrastructure as a service do. तो मेरा बैकग्राउंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है तो जो मैं इंशाल्लाह मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूंगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस टॉक. I would like to spend some time on this one. This is what I've done over the last 20 years. Right? What are the major components of a large scale infrastructure? Right. And it's just a few. This is not a exhaustive list, right? Databases. This is where all of the sort of the structured data is stored, right? Um, to give you the sort of different examples of data that's stored, um, user के credentials, username, password, and user का profile and photo and um, every single interaction that a user has. आप LinkedIn पे जो है आप जो भी पोस्ट करते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं, all of those, every single interaction is stored in databases. So databases is about essentially storing structured data. And there's given a company's need, there are so many different database technologies. आपने पढ़ा होगा like structured data is that there's SQL data, NoSQL data, just flat file systems. There's a host of database technologies, and each of these companies that I've had the opportunity to work at, and इसके लिए कोई भी कंपनी हो जाए आप Amazon ले लें, Google ले लें, they have to store data, uh, like billions of records, and not only store this data but retrieve this data uh, in milliseconds so that they can actually serve users with the optimal performance. So I'll go top row first and then go down. The second set of sort of data that is stored is sort of unstructured data, right? Uh, uh, f- audio, video files, images, and all kinds of unstructured data, right? Data logs ho gaye. There's a whole host of unstructured data that is stored, um, and the connection between stored unstructured data and structured data is that for every piece of unstructured data, whether it's an audio or a video or an image, there is metadata that is stored in some structured format. So there's high correlation between unstructured data and structured data. The next large component is compute, and this is where
all of the processing power that a given interaction needs. This is done through dedicated servers, virtual machines. There's multiple technologies. आपने Kubernetes का नाम सुना होगा. Kubernetes and Docker are the two massive platforms slash frameworks through which compute is done. Um, and as I'm sort of discussing this with the advent of AI, everything looks seamless. कि जो है, you're posing a question through text or audio, and like magically your answer is given. um, यो आपने जब कोई सवाल पूछा चैट जीपीटी में या गूगल सर्च में, the amount of processing that one given interaction takes is immense. इसीलिए right now OpenAI is a company that undergoes massive losses because they still haven't figured out how to optimally serve a given user's request. Compute is very, very important, and this is where companies need to like constantly optimize and figure out how do they serve a given user better. The next component is networking. All of these systems run on thousands and hundreds of thousands and now millions of servers. And many of these companies are global companies, so computers have to talk to each other uh, constantly, and servers rather, and then your request goes through the internet to a given company's server endpoint. The networking involves both uh, end user to server interaction as well as massive server to server interaction, not just within a given data center, but across data centers across the globe. Uh, the next component is content delivery. जब आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं या मोबाइल डिवाइस पे ऐप खोलते हैं, that content that immediately shows up, right? Most of that content is actually cached uh, closer to where the users are. Um, if Pakistani users are being served for that given app, that content is actually being served from a content delivery network that is closest to Pakistan. So this is how you companies essentially serve mostly static content that comes up when you open the app. वो सारा जो है CDN से जो है वो सर्व होता है. And then once you and I'll get to analytics in a bit. In order for a company to run all of these services, they need to have real-time monitoring, and अगर कोई problem होती issue होती है, engineers need to be alerted right away. And then last but not the least, in order for engineers to find out, hey, what's gone wrong, they need to be able to debug that. And then the underlying stuff is that these things need to be secure and compliant with different government regulations. And सारा डेटा जो है आजकल encrypt होता है over the wire. Developer tools are about how do we effectively build software in a way that companies engineers are able to like ship stuff at a very high velocity. Um, and then at the end of this whole thing, massive data is collected about users' behaviors and their usage. And there's big data platforms that allow companies to collect this data and process this data and get insights and business intelligence. This matters both for enterprise as well as consumer. Let me speed up a little bit because there's a few more things to cover. I want to sort of take one example and go a little deeper. And I've done this both at मैंने storage portals पे जो है फेसबुक में काम किया, फिर ऊबर में भी काम किया. प्रॉब्लम ये है कि जो है जब the specific example that I like to give here is database changes. Um,
a product engineers are constantly making database changes. And hota kya tha, and both and all companies suffer from this. And I've seen this given that I've seen this in two consecutive companies that I worked at, and I had the opportunity to solve this at both. um, कोई database change करनी है production में, तो the product engineering team, a product engineer will reach out to the database engineering team, which is a back-end team, कि जो है ये database schema changes कर दें. And then that request waits for the database engineer to get to it. And हालांकि change simple होता है, but कभी कभार हफ्ते लग जाते हैं before the change is actually made. क्योंकि the database engineer is working on something else, and this is manual work, and things need to be uh, attended to. And what this does is that it actually slows down product teams, क्योंकि manual interaction होता है, so product engineers, front-end engineers और back-end engineers के बीच. And I've seen this at Facebook and at Uber. This slows down by days and weeks feature releases. So I had the opportunity to first solve this at Facebook, and then I solved this at Uber as well. It's the change is actually very simple. The change needs to be approved by some backend engineer. So at both places, I've had the opportunity to design and actually release a self-service portal जहाँ पे a product engineer can come and say, here are the changes I'm making, and here's the details of the change, and this all of this can be has always the automation has always been possible. So what I ended up doing is that to automate that workflow in such a way that the product engineers are actually they're able to actually share the details of what needs to be changed, and the back engineers quickly look at it and approve. In most cases, the change doesn't even need to be humanly looked at by a human. And as a result of this, I was able to cut down database change release time from weeks to minutes. On the lab, I had the opportunity to do this at two places. Um, so the question is, like, if you look at all of this, like, where do you go from here? Um, and this is sort of for all of you to think about. I'm sure you've sort of thought about this. कि जो है, do I pursue an industry role, or do I go build my own product? With all of the advances that have been made in infrastructure and developer tools, you can actually the barriers to entry have been massively lowered. And अगर आप चाहते हैं कि जो है मेरे पास एक idea है, I want to be able to build on it. uh, today's modern development tools and put today's modern infrastructure, I'll get to that in a little bit. It is possible for you to even, like, you could be away from the centers of innovation, whether it's Silicon Valley, Seattle, New York City, London. You can actually build stuff, and all of these tools have been democratized and are available. So let me spend a few minutes to, like, talk about the different roles that are available in the industry, and then I have a slide or two to talk about what's next. Um, and I've had the opportunity to मैंने software development किया, and I've done product management, I've done technical program management. I just wanted to give you a glimpse of the kind of software engineering roles and non-engineering roles that are available. On the engineering side, there's a whole range of engineering roles. And front end engineer के roles हैं जिसमें जो है you can do development, web, yeah, mobile. Um, Web is not dead. Web is still alive. Most of the enterprise users अभी भी जो है web use करते हैं. फिर जो है backend engineering हो गया, like storage and compute and all that. Um, Muskan talked about machine learning and database data engineering earlier.
That's a path to take, and that there's a lot of demand for machine learning and data engineers. And then at startups there's this role called full stack engineer. This is an engineer who has experience developing software at every layer of the technology stack. Um, and then DevOps, it somehow got repeated, but the DevOps is about operations. And then on the product strategy and execution side, right, there's product management roles where you get to like drive the vision and roadmap of a given product. And then technical program management, which is more focused on execution, but the reality of the industry is कि जो है जब अगर आप कोई infrastructure areas में काम करते हैं, infrastructure में अक्सर product managers नहीं होते, technical program managers play the role of product management, technical product management as well, which is what I've done for the last 20 years. And then there's like business analyst roles, and that there's a whole host of them available in the industry today. And then last but not the least, operations. There's these companies don't operate in a vacuum. There's massive challenges running a infrastructure that involves millions of physical servers out there. With all of the modernization in AI and all, the infrastructure doesn't go away. What AI has done is it's actually made everything look very seamless. These are all various sort of engineering roles available and non-engineering roles available. Let me end with a couple of slides. Like where do we stand today? All of this infrastructure that I talked about, whether it's at Microsoft or startups or Meta, these companies have invested massive, like hundreds of millions of dollars, in some cases, billions of dollars in building that infrastructure. But over the last 10, 15 years, all of this infrastructure is now readily available. चार पांच जो है popular cloud providers हैं, but there's like dozens of them around the world out there. I just listed a few. For those of you who would like to work on infrastructure type stuff, the tooling and the services available there by cloud providers makes it very easy to develop this. Do you have a question, Dr. Kamran? Let me finish up, and we'll talk about it. And then I want to touch on. I'm sure this is something that is top of mind for you. Like where do we go from here in terms of all of this open AI, not open AI, but AI based tools that are out there. Um, Up until 2 years ago, all of the sort of modern software tool development was in the hands of large companies. But in the last 2 years, there's been a massive shift in these tools available where if you have an idea, you could use a product like Replit or Cursor to actually like quickly develop stuff. But then all of these that also then connect to the infrastructure services that I just talked about, right? The infrastructure is still needed. AWS and Azure and all of them are needed. What Windsurf and Replit and Cursor and Copilot tools have done is they've made that initial software development extremely easy. What used to take months to get started on building a new product now takes days or weeks. Um, in conclusion, think about how I'm sure many of you are thinking about whether you want to go work at a large company or build your own. The choice is yours. The modern AI assisted software development makes it extremely easy to do your own things, and I would highly encourage you to actually think about doing your own stuff as well. Chile, let me stop there, and if you have any questions or comments. Amazing, Arshad bhai. This is Dr. Zafar from the area. So we were looking forward to your talk.
So thanks a lot. Let's leave the questions. You're welcome, bhai. Muskan, in what order do you want to take questions? Sure, sir. Sir, let me call the names और फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं. सर फरीद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें. Thank you. Thank you very much for the webinar, Sir Arshad, and it was an insightful webinar for us. Lots of information. So my question is that you worked at top tech companies like LinkedIn, Uber, Meta, as you mentioned. So like reaching or like working at those companies is a dream for us, especially working as a department the director or head of technical whatever it is. So what makes you transition from one company to another company, another big tech company, and like हाँ what made you apply to the other company? Like what was the reason for it? If जी it's जी personal, you can look skip it, it's हाँ fine. हाँ नहीं, गुड क्वेश्चन. मेरा मेरा मानना ये है कि जो है टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. एंड सिलिकॉन वैली की खासियत ये है कि जो है कोई भी जो है किसी भी कंपनी में जो है 4-5 साल से ज़्यादा काम नहीं करता. क्योंकि things are changing, new challenges come up. So I've always been motivated by what's next. माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 11 साल काम किया, बट 11 साल में जो है आई वर्कड ऑन वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स. I worked on Outlook.com, which is email. I worked on Xbox One. I worked on Windows 10. तो हर 2-3 साल जो है मैंने चेंज completely change what you work on, completely different. What it does is it allows you to stay fresh on new problems to work on. Um, and जब आप किसी भी चीज़ पे जो है ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, you also then become a little monotonous. And I have made sure that I make changes every 2 to 3 to 4 years. So I hope that answers your question. Yeah, thank you for your answer. सर फैजान, सर आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इट वाज अ ग्रेट वेबिनार. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया थिंग्स को. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ना आपने कुछ बताया था कि आपने कुछ ऐसा काम किया था जिसमें हमें वीक लगता था तो उनको प्रोसेस करने में, और आप फिर वो मिनट्स में होने लगा वो काम. तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. और ये क्वेश्चन है सर मेरा कि ये एसडी रोल्स क्या होते हैं. मतलब आपने बताया रोल्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, जी. तो ये एसडी रोल्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. थैंक ठीक यू. है. या तो जो जो मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, हर कंपनी में ये प्रॉब्लम होता है जब आप कोई भी चेंजेस करने हो प्रोडक्शन में. मैंने जो एग्जांपल दिया था वो डेटाबेस स्कीमा चेंजेस का. जब चेंज करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द फ्रंट एंड आर यूजुअली नॉट अलाउड टू मेक द चेंजेस डायरेक्टली to production. So they have to then send it to a backend engineer to make the change. बड़ी कंपनीज में वो जीरा टिकट भेजते हैं, एंड देन somebody has to look at it. दिन लग जाते हैं, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं बिफोर दैट पर्सन रेस्पॉन्स, क्योंकि somebody has to manually look at it. तो इससे होता क्या है कि जो है काम फ्रंट एंड में रुक जाता है. समबडी जस्ट वेटिंग फॉर समबडी टू, जैसे इंडिया पाकिस्तान में आपने किसी फाइल को जो है किसी गवर्नमेंट दफ्तर में भेज दिया, एंड आप वेट कर रहे हैं कि जो है किसी ने साइन करनी है इसको. सिमिलर थिंग हैपेंस इन द इंटरनेट कंपनीज एज वेल. एंड द वे टू सॉल्व दिस इसके जो है इसको ऑटोमेट कर दें. एंड जो एग्जांपल मैंने स्टोरेज पोर्टल के दिया, basically it's an opportunity to for the front end engineer to actually tell the back end engineers, okay, these are the changes that I need to make. And simple internal web portal hota hai, and the front end engineer says here are the changes that I need to make to this table in this database. And
they, then the automation kicks in to actually validate if these changes are valid or not. Um, and then these changes are now first applied to a development environment so that everything is tested, and then it is queued up to make the changes into production. Um, and rather than people wait for these to be manually deployed, the storage portal allows this entire thing to be automated. तो जो चीज़ पहले जो है कई हफ्ते लग जाते थे for a change to happen can now simply be done in a few minutes, and then the engineer can immediately see the change that they've made. आपने एसडीई के बारे में पूछा. एसडीई stands for Software Development Engineer. That is the standard title given to engineers just across the industry. Um, कुछ कंपनीज उसको स्वी कहते हैं, SWE, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. SDE जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का टर्म था, विच for the longest time had become a standard. But then now and all engineers are called SDEs. It's not specific कि जो है SDE is front end or back end. All engineers are called SDEs. Now all engineers are called SWEs, software engineer. Okay, thank you so much, sir. You're welcome. Maha. Assalamu alaikum. Thank you Walaikum so much salam. for your insightful webinar. मैं अभी यूएसए में हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ. मेरी डोमेन एलएलएम्स है जी. एंड आई ऑलवेज वांट टू परस्यू माय करियर इन अ बिग टेक कंपनी. अब मेरी जर्नी में मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुई है, लीड कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेकिन अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि मैं हमेशा से एआई में, जब से एआई आई है, मैं एआई में काम करना चाहती हूँ, बिग टेक में भी. सो व्हाट वुड बी द रूट, और नॉर्मली जब भी बिग टेक कंपनीज हायर करती हैं तो व्हाट आर द क्वालिटीज दे रियली लुक इनटू? आई वांट टू नो दैट. जी. Thank you for your background. Lead code is a good way for you to look at what the interview process for the companies is. कि जो लीड कोड करते रहें, जितनी आप लीड कोड प्रॉब्लम्स करेंगी उतना आपको जो है कॉन्फिडेंस होगा इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर करने में. बट इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो इंटरव्यू क्वेश्चंस, बट अक्सर लोग जो है वो इंटरव्यू तक भी पहुंच नहीं पाते क्योंकि द कंपटीशन इज सो हाई. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो है आप एआई में जाना चाहती हैं एंड यू वांट टू गो डीपर इनटू इट. जो मैंने सॉफ्ट मॉडर्न सॉर्ट ऑफ एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स बताएं, वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स इज एक्सट्रीमली इजी. तो इधर यू कैन या तो आप सोलो प्रोजेक्ट कर सकते हैं या गेट टुगेदर विद अदर people, other competent engineers who are also sort of on a similar journey. उनके साथ joint projects करें, right? Think of a new, and there's hundreds of ideas that are out there, and it's more important to show, um, demonstrate कि जो है आपके पास वो capabilities हैं. And the best way to do that when you're a student is to work on cool new projects. हो सकता है प्रोजेक्ट जो है एक प्रोडक्ट बन जाए and then you can actually go pursue that on your own. So it's important to actually continuously work on sort of new ideas, new projects, and then if अगर वो viable है तो जो फिर उसको आप resume में ऐड कर दें, it essentially then improves your chances to actually get into these roles. And आपने पूछा what do these companies look for? These companies are looking for, do you have the skills to actually be productive and impactful at this company? And the best way to demonstrate that is to show projects. And my own kids are now in college, so I can totally relate to what you're just saying. And I'll give you the same suggestion जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ. न्यू प्रोजेक्ट करते रहें, एंड देन यू realize कि जो है
the strength of your resume continues to grow, you can then now remove sort of some mundane projects and make room for new projects that you're working on. Thank you so much. And happy to feel free to connect with me on LinkedIn. I'll give a general advice. सवाल आपका अच्छा था महा. Lot of people are hesitant to apply to big companies, um, and I also hesitated early in my career, but there's not a whole lot of difference between people who go to top schools and people who go to other universities. It's a matter of giving it a shot. Uh, to be very honest with you, at Microsoft, हालांकि मैंने वहाँ 11 साल काम किया, बट आई गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट इन माय थर्ड अटेम्प्ट, राइट. ऐसा नहीं कि जब मैंने स्टार्टअप में काम किया माइक्रोसॉफ्ट में मुझे जॉब मिल गई, नहीं. आई वेंट थ्रू 3 डिफरेंट इंटरव्यूज ओवर अ ईयर. द फर्स्ट टू आई डिड नॉट सक्सीड, एंड थर्ड अटेम्प्ट में जो है the team that interviewed for decided to hire me. So don't get discouraged when large companies turn you down. And then last but not the least, networking बहुत बहुत ज़रूरी है. You have to be connected with people in the industry. I know many of you have sent me LinkedIn requests. Inshallah, I will look at them and process them, inshallah. Faisal bhai. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अरशद सलाम भाई, भाई. बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ज्वाइन किया और मेरी रिक्वेस्ट को जो एंटरटेन किया. ये ऑनर है कि आपने जो है वो बच्चों को जो है अपने एक्सपीरियंस से और अपने टॉपिक से वो किया. सर आपकी दो चीज़ें थी. आपकी एक स्लाइड में एक एसेट करके वर्ड था, आप उसको ज़रा ड्रिल डाउन दोबारा से करेंगे. और दूसरी बात है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स को बताया. अब जी. आजकल विद एआई और एलएलएम्स और जो कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई होती है, इसके साथ जी. साथ अब आपके इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिवैम्प की ज़रूरत है. और स्पेशली जो ये जो उसके ऊपर कुछ और काम चल रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के, या कोई ऐसी आपको नॉलेज है, या वो डोमेन अभी आप देख नहीं रहे बिल्कुल भी. Um, या सो आपने दो सवाल पूछे. एक तो एसिड के बारे में पूछा आपने, एंड I'll explain that to you, and you are asking about हार्डवेयर के इनोवेशंस वहाँ क्या हो रही हैं, नहीं, मैंने राइट. इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब ओ आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ अगर नहीं. आप उस डोमेन को भी चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे बेसिकली, राइट. हाँ. इलेक्ट्रिकल, मेरा जो है बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर में है, सो आई डोंट लुक इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल. बट व्हाट आई कैन से इसके जो है, AI has placed massive demand on infrastructure, especially compute infrastructure. So what's happened is the demand and जो data centers run करते हैं, cost of electricity is the largest cost. Power is the largest cost. So there's constant innovation happening in the space, but I don't follow that on a day-to-day basis. Acid के बारे में पूछा. Acid is the short form for atomicity, consistency, isolation, and durability. What that means is कि जो है जब आप database transaction करते हैं, is the database transaction fast enough? Is it consistent? Meaning कि जो है जब आप कोई डेटा जब आप लिखते हैं, can it be retrieved? Can it be stored in a consistent manner? Um, and millions of database transactions are coming for any infrastructure. So and the database backend treats each of those in an isolated form. That's what isolation means. And then durability is about over the period of time, the data needs to perpetually exist in most companies. Just say Microsoft is a 40-year-old company. They have data from decades ago. So uski durability kya hai? Like how do you keep the data in such a way that data is not lost? That's what durability is about. Rizwan?
Thanks, Arshad. Thanks, Arshad Saab. Thank you so much. You're Really welcome, man. appreciate it. You're welcome, man. Rizwan, go ahead. अस्सलाम वालेकुम हुसैन, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं सिलिकॉन वैली में होता हूँ। आई ग्रोथ गुरु की मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है। तो अच्छा, पहले तो मैंने माशाल्लाह। आपका बड़ा थैंक यू कहना था। माशाल्लाह, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम अकम्प्लिश पीपल लाइक यू। आप लोग तो हमारा प्राउड है कि माशाल्लाह इन सच पोजीशंस और लीडिंग रोल्स में आप लोग रहे हैं। तो फैसल भाई इज अ ग्रेट फ्रेंड, एंड थैंक यू फैसल भाई फॉर ब्रिंगिंग अर्शद हुसैन इन दिस नेटवर्क और बच्चों को गाइड करने का। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा था कि ये जो अभी इंटरनेट पे हम ये देखते हैं कि पीपल से बिलियंस ऑफ डिवाइसेस गेटिंग कनेक्टेड, और एक दफा मैं भी अपने घर में देख रहा था तो देयर वर 45 डिवाइसेस राइट कनेक्टेड टू इंटरनेट। अब देखें ना, जिसमें वॉशिंग मशीन भी आप कनेक्टेड हैं, तो हमारे स्टोर्स भी कनेक्टेड हैं, कैमराज हैं। तो ये जो इंटरनेट का जो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे इसका क्या इफेक्ट है? क्या आप सोचते हैं कि ये इंटरनेट किस तरह इवॉल्व होगा कि नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं? तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो है इंटरनेट विल बिकम इनविजिबल, राइट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जो है आप डे टू डे जो है आप आपकी फ़ोन लाइन के बारे में नहीं सोचते। आप जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं सोचते। आपके घर में जो गैस आती है, यू जस्ट assume those to be working, right? You don't think कि जो है they will any fail at any point, and जब जब पावर आउटेज होती है, अरे पावर आउटेज भी हो सकता है, right? The point is that the internet is become so prevalent in our lives कि जो है you don't think about these things being connected. um, and every device that you have in your household that is connected to the internet, the companies are hungry to collect data about you. आप अपनी वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे यूज़ करते हैं, um, whether you use heating or not in the house. These companies want to collect data, and they will पहले पहले होता ये था कि जो है they will ask for your permission to collect this data. Now we have entered a world where these companies don't even ask you, right? They just simply collect data. There are both pros and cons of that. The pro is that the more the companies know about you, the better they can serve. But the companies also like have massive outreach in terms of what data they're collecting. There are negative connotations of the amount of data they're collected, and they collect as well. But these are here to stay. They won't go away. I don't know if I answered your question, Rizwan bhai. नहीं नहीं, थैंक्स थैंक्स फॉर गिविंग दैट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल आपकी बात सही है। जी। हम मतलब पाकिस्तान में तो खैर आप भी रहे हैं, कुछ चीजें हम एज्यूम नहीं करते, बट ये हायर वी एज्यूम कि ये चीजें तो चल रही हैं, तो दे विल कंटिन्यू टू हाँ, दे विल बी डूइंग on a personal level though, ये मैं ये कहूँगा कि जो है I I I turn certain devices off. मैंने घर के अंदर कैमरास नहीं लगाई हैं, right? I don't want even just from a religious point of view somebody recording my movements in the house. But कई लोग जो है घर में वीडियो कैमरास लगाते हैं कि जो है हम जो बाहर जाते हैं कि जो है पता चले कि जो है अगर घर में कोई घुस घुस तो नहीं रहा है. But at the same time, these devices are recording your voice, by the way, your phone, Facebook and WhatsApp and uh, Alexa, सारी devices जो है they are listening to you continuously, right? uh, आप बैठे हुए हैं, आप किसी चीज़ के बारे में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यू ओपन अप फेसबुक और गूगल सर्च, you get an ad within minutes, within seconds sometimes. And the way companies are able to do this is because they're collecting data and processing it. um, right? Just to give you an example, and हम लोग जो है बात कर रहे थे to go on a vacation, and टर्की का डिस्कशन आया. The next time my wife opens Facebook,
there's an ad for vacation in Turkey, like within probably 2 to 3 minutes, right? So these companies have invested massive infrastructure in the back end. Well, in that given example, they've collected your voice, they've done speech recognition, voice to text translation, they have processed it, um, and they've served you ads, all of that within a couple of minutes. Yes, Ikra, they are breaching, but you also, when you buy a device, or when you install an app, वो जब शुरू में जो आप consent sign करते हैं, you essentially given them permission that to collect the data. You have to be extremely careful as to like what permission you give them. And by default, now devices collect all kinds of information. Thank you, Mr. Hussain, for the perspective. Thank you. And then thank you for doing this, Rizwan Bhai, and happy to connect with you here as well. Fahad, अस्सलाम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही, थोड़ी धीमी है सर बट आ मेरा रही है। जी सर मेरा क्वेश्चन था कि माइंडसेट के बारे में ना। अब जैसे मतलब जिस स्टेज पे आप हैं, आपने मुख्तलिफ काम किए शुरू से लेकर अब तक, तो एक बच्चा जब रिसेंटली ग्रेजुएट हुए उसके लिए क्या पर्सपेक्टिव हो कि भाई अपने आप को माइंडसेट रखे कि उसने उस स्टेज पे जाना है। तो मैं वो जर्नी मतलब पूछना चाहता हूँ कि क्या माइंडसेट के साथ आप शुरू किया था और आज इस स्टेज पे हैं, हाँ जैसे जी, और सर आप गाइड करते हैं। हाँ, दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि जो है पिछले 2 साल में जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी तब्दीली आई है। एंड द रियलिटी ये है कि जो है द इंडस्ट्री हैज़ बीन मैसिवली डिसरप्टेड। जॉब्स उतनी है नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, बट द इंडस्ट्री इज एक्चुअली गोइंग थ्रू ए रीसेट। दो तीन चीज़ें कहूँगा। एक तो जो है मेक श्योर कि जो है आपका जो एजुकेशन है, दैट यू वर्किंग ऑन, अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं तो जो द मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, यू आर वेरी फेमिलियर विद इट। अभी एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री में ये है कि जो है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जो है जॉब्स उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, बट द नंबर ऑफ पीपल ग्रेजुएटिंग आर मच हायर। And the best way to actually address that is जो माहा ने जो सवाल पूछा कि जो है क्या करना चाहिए, and the example that I gave there is ये जो न्यू एआई टूल्स हैं, जो नए जो एआई टूल्स हैं, दे अलाउ यू टू एक्चुअली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स जो पहले मुश्किल हुआ करती थी। तो आइडेंटिफाई ईदर सिंगुलर प्रोजेक्ट्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ऑन देम। मैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो एंड अगर आप 2-3 लोगों के साथ काम करते हैं, ऑल थ्री ऑफ यू कैन एक्चुअली क्लेम दैट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑन योर रेज्यूमे। एंड कंपनीज देख रही हैं कि जो है आपने क्या किस टाइप की प्रोजेक्ट्स की हैं। एंड देन द लास्ट थिंग आई से कि जो है रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से है। रिस्क तो आएगा, राइट? एंड यू जस्ट हैव टू हैव कॉन्फिडेंस के जो है um, अल्लाह ताला रज़ाक है, एंड अल्लाह ताला इज़ द प्रोवाइडर। एंड ज़रिए कई होंगे, एंड ऑलवेज मेक दुआ के जो है हम तवक्कल रखें कि अल्लाह ताला राज़िक रज़ाक है, एंड ही इज़ द वन हु इज़ गोना गिव अस आवर सस्टेनेंस। एंड pathways will come up, and network करते रहें लोगों से, and reach out to people, and inshallah things will work out. Fuzail? यस सर, थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा जो पॉइंट बताया, स्पेशली लास्ट वाला, वो काफ़ी अच्छा था। थैंक यू हाँ सर। जी, हाँ जी। Assalamu alaikum, sir. Am I वालेकुम audible? सलाम है। Go ahead. Sir, I have two questions. First is how you and other your colleagues are using AI in their in your development environment. And the second is how do you see the future of development environment? Because
you have answered the previous question. What should the CS or SC students do? Uh, that is totally okay. But how do you see how the development environments of the future look like in जी. 2 years? Let me put this in perspective. Um, ये जो no, first of all, I do use AI tools in software development. But let me give you a perspective. Um, ये जो tools for software assistance and software development कोई नई चीज़ नहीं है, right? There constantly been innovation in helping the engineer code better, right? Um, you would be surprised to know कि जो है when I started in the late 90s, the way we would write software is the way we would write code is open a text file and start with pound include studio.h, right? How many of you can actually relate to what I just said? Probably less than half of you, right? The reason is um, when tools like Visual Studio came in the late 90s, early 2000s, um, it took away the need for you to write code by hand, right? Um, and massive improvement in the way software development was done, right? So what I mean is, and then like frameworks came and massive open source projects came. All of these were stepping stones in making software development faster and faster. Um, Today's AI assisted software tools have exponentially increased the speed of software development, but नई चीज नहीं है. That said, there is also a massive artificial push to adopt AI tools. Um, and the reason why companies want to do this is because they feel like this is the technology whereby they don't need to have as many engineers that they used to. But there is a massive misconception in the industry that somehow the AI assisted tools will reduce the number of engineers needed. Longer run, I don't think it will reduce the number of engineers needed. क्योंकि basically what is happening is जो जो आपका रन ऑफ द मिल कोड है, जो रेगुलर कोड है, वो जो है AI based software development tools कर लेती हैं, and then engineers can actually focus on writing business logic and complex software and all of that. So what you see in the industry right now is a temporary it's a disruption, but there'll also be a new normal in which um, the industry will need software engineers to actually work on it because um, business logic जो है वो AI tools नहीं कर सकती, right? There's also this misconception कि जो है over time the AI based tools will actually improve. um, any AI tool वो जो है वो सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करती है and over time it will know millions of patterns, but any new idea that you can think of, um, then there's no pattern for it, then somebody has to write code for it, right? So yes, it's disruptive, but it's not. It's to me, it's a temporary disruption. The industry will continue to grow. In some cases, things have taken a sort of a dramatic shift. पहले होता यह था कि कंपनीज में अगर कोई नया कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट बनाना चाहती है कंपनी, what would happen is a product manager and a small team of product manager and a few software engineers will get together. उसके लिए जो है बजट अप्रूव होता है and then they'll spend 3 months to like build a prototype of that product.
modern tools like Replit and Cursor, what they allow you to do is a product manager can simply fast track that particular software development process from 3 months to say 2 weeks. And it does not take as much of an effort. So yes, there are massive shifts uh, happening, but the industry, in my opinion, will continue to grow. Did I answer your question, Fuzail? Yes, it is clear. Yeah. Thank you so much. It is a normal question for in the mind of every हाँ जी, CS हाँ जी, हाँ SC जी, like a हाँ जी। student. Thank you for clearing. आशिक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जैसा आपने बताया कि आपने बिग टेक कंपनी में काम किया है, तो आपके साथ काम करने वालों में से कोई ऐसे जो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हों? क्योंकि सर मैं अभी अंडर ग्रेड में बीएस फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा भी मिशन ये है कि मैं पीएचडी के लिए बाहर जाऊँ। तो उसके बाद बिग टेक कंपनी में जाने के लिए मतलब क्या वहाँ पे हमें जॉब मिलेगी? अगर मिलेगी तो हम वहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे कंपनी में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों की जगह ही नहीं होती। तो नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। गुड गुड क्वेश्चन। बायोटेक कंपनीज आजकल जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही हैं, इनोवेशन हो रहा है। तो उनको भी जो है सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। Having some software development skills, especially in this sort of AI assisted world, जॉब्स हैं। मतलब इनफैक्ट बायोटेक कंपनीज विल कंटिन्यू टू हायर फिजिक्स फिजिक्स पीपल हु हैव फिजिक्स बैकग्राउंड, दे आर वेरी मच नीडेड इन द हाईटेक कंपनीज। जो जो हार्डवेयर डेवलप करते हैं उसमें फिजिक्स इज यूज्ड, मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत है, मैकेनिकल इज़ अ की कंपोनेंट। But if you're on the natural sciences side of like chemistry and biology, to me those are like core sciences. उस द नीड विल नॉट गो, उसकी नीड हमेशा रहेगी। बट उसके साथ अगर आप जो है कोई सॉफ्टवेयर कंबाइन करते हैं, then it becomes then the companies like biotech companies are looking to figure out how do they how do they bring natural sciences and technology together. Opportunities will be there, and certainly in the US there are opportunities. हाँ, जैसे फैसल भाई ने कहा, हेल्थ केयर में जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उससे पहले सवाल था, केमिस्ट्री एमफिल रिसर्च स्टूडेंट, विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट विल हेल्प? आई डोंट नो इफ देयर इज अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, मदीहा, बट देर there's look up and feel free to sort of do your own research. But there's so much software development and software advancement happening that I'm sure there are tools and technology that will be beneficial to you. ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच You're फॉर welcome. सच इम्पोर्टेंट। हाँ जी, उमर। वालेकुम सर। वेलकम। हाँ सर, जैसे कि आप इतना अर्सा फैन कंपनीज और टॉप टेक में काम कर चुके हैं, और हम जैसे लोग अभी जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, टेक कंपनीज में जाने का ड्रीम रखते हैं, तो अब आप क्या एक एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को? और अगर आपको दोबारा अपनी ट्वेंटीज में जाने का मौका मिले और आज के हालात को देखते हुए कि जैसे वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट एंड वी एज नेशन हाउ कैन वी स्टैंड आउट, मेक अस स्टैंड आउट, तो क्या टूल्स लर्न करने चाहिए, टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना चाहिए, और कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम जी स्टैंड अप कर सकें? जी। Um,
अगर अगर if I were to go back 30 years and redo what I did, um, मेरा मेरा एडवाइस ये होगा कि जो है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, whether it is core subjects such as mathematics and physics, या कंप्यूटर साइंस में अगर आप कोर सब्जेक्ट्स देखें, algorithms and data structures and computer networks, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोर्सेज, उसको कभी इग्नोर ना करें. द मॉडर्न the push for the modern workforce places this sort of unnecessary importance on कि जो है आप ये कोडिंग टूल सीख लें, वो कोडिंग टूल सीख लें, आपको जॉब मिल जाएगी. दैट्स अ शॉर्ट टर्म विन. बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, unless you have strength in foundational subjects like mathematics and physics, आपकी आपकी जो है करियर ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी. यू विल लूज the edge very very quickly. The reason why companies are pushing for learn the AI tools and you'll be successful. This has also created a very uh, I would say very harmful false impression के जो है, ओ हाई स्कूल का स्टूडेंट भी जो है वो हाई स्कूल की स्टूडेंट भी जो है वो जो है एंटरप्रेन्योर बन सकती है. हाई स्कूल का स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप. नहीं. एंड आई वुड माई रिकमेंडेशन इज stay in school, right? Master the core subjects. Don't get pressured by quick win, and inshallah in the long run, things will work out better for you. And there is this sort of very and company, and the reason why companies are doing this because उनको जो है ये टेक्निकल वर्कफोर्स अभी चाहिए, राइट? तो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग दिस मैसिव पुश के जो है डू दिस डू दैट एंड देन कम वर्क फॉर अस. नहीं, आई वुड हाईली recommend that you go deeper into mathematics and physics and the core subjects in computer science. You will have a lot more confidence handling things. होगा ये कि जो है इन टेक इंडस्ट्री में जो है और भी चेंजेस आएंगी, एंड देयर कॉन्स्टेंटली कम. बट व्हेन यू हैव योर फाउंडेशन स्ट्रांग, एंड अ गुड एनालॉजी इसके जो है, जब आप वही मकान बनाते हैं, राइट, somebody would say कि जो है, ओ दीवारें खड़ी कर दें, खिड़कियां बना दें, दरवाजे बना दें, and ओ घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है. बट इफ योर फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रांग, then that house is standing on shaky ground, and छोटा सा अगर earthquake आ गया तो सारा जगह collapse हो जाएगा, right? And that is why it's important to actually stay true. आप अपना foundation strong करें, उसके ऊपर then you can actually build. आप उस पे जो है एक मंजिला घर नहीं बल्कि दो मंजिला घर बना सकते हैं, तीन मंजिला घर बना सकते हैं आप, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है. Hope that helped. मुस्तफ़ा. हाय सर, दिस इज मुस्तफ़ा सदी. सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है. सर मेरा दो क्वेश्चन है बेसिकली. जैसे कि आपने कहा कि आपने काफ़ी सारी क्या नाम है डिफरेंट टेक कंपनीज में जॉब की है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक. सो मेरी ये क्वेश्चन ये था कि रीज़न क्या थी कि आपने उसको जो है वो आपने उन वाली जो टेक कंपनीज थी उनको छोड़ के आपने उसका क्या रीज़न था बेसिकली? कि होती ना कोई अप्रोच होती है कि भाई अब मैं इन कंपनीज को छोड़ के आगे अगर मैं जा रहा हूँ, फेसबुक छोड़ के मिसाल के तौर पे, और मैं आगे इसी कंपनी में जाऊँगा, तो क्या क्या रीज़न था कि आपने उसको छोड़ा? और सेकंड थिंग कि लाइक अगर आप छोड़ लेते तो क्या उसकी रीज़न थी? ये चीज़ थी. हाँ, हाँ. Interesting question.
कई कई बार जो है कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है, एंड देन and then you get to sort of explore and तो बाज केस में जो है मैंने चेंज किया जॉब, बाज केस में जो है कंपनी दोज कंपनीज रीच्ड आउट टू मी एंड आई एक्सप्लोर्ड द जॉब अपॉर्चुनिटी। एंड माइक्रोसॉफ्ट मेरी जो है वजह, माइक्रोसॉफ्ट से फेसबुक मूव होने की वजह अलग थी, फेसबुक से ऊपर जाने की वजह अलग थी। um, and the reasons are actually very different from each other. Microsoft, हालांकि मैं सिलिकॉन वैली में होता हूँ, बट माइक्रोसॉफ्ट जो है वो वॉशिंगटन स्टेट बेस्ड कंपनी है, तो अगर मुझे ग्रो होना था तो आई वुड हैव हैड टू मूव फ्रॉम सिलिकॉन वैली टू सियाटल। तो एज अ फैमिली जो हम लोग वहाँ मूव नहीं करना चाह रहे थे, तो फेसबुक जो है सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी था, फेसबुक आई मूव टू फेसबुक। फेसबुक से ऊबर जो है ऊबर फेसबुक जो है आई वाज वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं काम करता था, एंड ऊबर कॉन्टेक्टेड मी कि जो है सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रन करें, तो जो है आई वेंट टू ऊबर and built the entire team to build Uber's technical program management team to build Uber's infrastructure. So in some cases career growth की opportunity थी, in some cases um, financial reasons थे, तो they vary from one company to another, but my recommendation would be if you're working, especially in Silicon Valley, you're constantly looking for, hey, is there a better, is there something better to work on? And कभी कभार होता ही है कि जो आप मूव करते हैं, and then it might not work. For example, आपने पूछा कि जो what were the reasons for leaving? मैंने लिंक्डइन ज्वाइन की। लिंक्डइन ज्वाइन करने के 6 महीनों, विद इन 6 मंथ्स इट वॉज वेरी अपेरेंट कि जो है there was no need for them to hire me, क्योंकि कंपनी was going to do a massive restructuring, layoff होने वाला था, तो we mutually decided कि जो है I should leave LinkedIn. तो when you become proactive in discussing this, then it becomes easier to have those conversations as well. Arslan? थैंक यू सर। आवाज़ आ रही है मेरी सर? आ रही है। Just a minute, Zia, I'll answer your question in chat in just a minute. जी, Arslan, go ahead. जी थैंक यू सर। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना था, आपने दूसरे लोगों पे आंसर किए लेकिन उससे बहुत गाइडेंस मिली और हेल्पफुल थे। जी। सर मैं फैंक के लिए तैयार कर रहा हूँ, फैंक इंटरव्यूज के लिए। जैसे आपने बताया कि हमें प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, सर मैं भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी एलएलएम को फाइन ट्यून कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के अंदर। हम्म। लेकिन सर सिमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी जो कि इम्प्रूव हो रही है, तो और टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, जैसे एजेंट्स आ गया, एम सी पी आ गया, ओपन एस टी किया। तो क्या हमें एक टेक्नोलॉजी में जैसे फाइन ट्यून है उसमें फर्दर डेप्थ में जाना चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज लेनी चाहिए, या हॉरिजेंटली एक्सपेंड करना चाहिए फैंक में जाने के लिए, और स्किल्स भी लेनी चाहिए, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए? तो जब हम अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं तो क्या अप्रोच बेहतर है, हॉरिजेंटली जाएं या वर्टिकली इन डेप्थ जाएं एक टेक्नोलॉजी के अंदर? थैंक यू सर। जी, it's not an easy question to answer because it depends on what your motivations are. एक तो ये कहूँगा कि जो है जब आप प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे में आप लिस्ट करते हैं, इट हैज़ टू शो कि जो है आपने कोई मीनिंगफुल काम किया है। तो जब तक आप डीप नहीं जाते, इट इज़ अनलाइकली टू टू बिकम मीनिंगफुल। तो द बैलेंस बिटवीन डेप्थ एंड ब्रेड्थ इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, गो डीप एंड शो के जो है दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड। होता क्या है कि जब आप फैंग कंपनीज में इंटरव्यू करते हैं, अक्सर होता क्या है कि दे स्टार्ट विद अ क्वेश्चन एंड देन दे गो डीपर इनटू द टॉपिक, राइट? अगर वो डीप जाते हैं, अगर आप जो है उनके सवालों का जवाब नहीं देते, देन इट शोज के जो है, ओ
you're just working at the surface level. You're just listing a bunch of things. So before you pick up some new technology or new framework to work on, bring your depth to a point where you actually solved an interesting problem. You've shown कि जो है it can be solved before you step back up and go horizontal. Thanks a Did it lot, sir. help, Arsalan? Yes, sir. Helps a lot, sir. Thank you. जी. Um, I'm sure that Zia ने जो question पूछा, let me answer that, Muskan, but yeah, but go raise your hand as well. Zia का question था कि जो है what are the core subjects in computer science? Core subjects जो है uh, at the undergraduate level, algorithms, data structures, um, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मैथ के कुछ कोर्सेज हैं जैसे लॉजिक, discrete mathematics. Discrete mathematics is sort of a confluence of mathematics and computer science. Um, um, those are some of the topics off the top of my head. Compilers हो गया. You should know these, and then um, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है जिसमें जो है हाउ टू डू मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है. And we can look it up, and I can always share with Muskan what I think of as sort of core subjects, and then she can share it out with you as well. But if you go through any good university, there are certain sequence in which these subjects are taught. Um, Data structures पहले होते हैं, and then make sure कि जो early जो subjects हैं जैसे data structures and algorithms, उस पे आपको command होना चाहिए, because those are even more foundational than some of the other ones. तो make sure that you don't ignore the early ones जो आपको first year and second year of university में जो पढ़ाए जाते हैं. And what happens is that if you don't have a good handle on it, then your third year and fourth year of your university just becomes a little more harder. Zubair, go ahead. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. मेरा नाम जुबैर जफर है और मैं ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ जी. एंड आई ग्रेजुएट इन मई 2026। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपने वहाँ कोई आंसर किया था कि एक्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग या डीएस से आप प्रोजेक्ट्स पे काम करें और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि नेटवर्किंग इज वन ऑफ द प्राइम थिंग्स यू शुड वर्क ऑन, कि आप अपना नेटवर्क कैसे बनाएं। तो सर इस हवाले से थोड़ी सी टिप्स दे दें कि हम नेटवर्किंग किस तरह से कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट। जी. The- Certainly, LinkedIn is definitely a good source to network with other people. Just this forum, and then many of you have sent LinkedIn requests. And the way to go about doing this is a couple of ways. One, LinkedIn पे connect करें, and then for people who you connected with on LinkedIn, see if you can actually like set up some time with them. कि जो है, I'd like to learn about what you do, and get on a phone call or a Zoom call and learn. वैसे आपका सवाल जो है वो my youngest is now a second year in ask them to sort of share their perspective, learn from them. उससे होता क्या है कि आपका हेजिटेशन चला जाता है. जितने लोगों से आप बात करते हैं, फ़ोन या जूम कॉल या इन पर्सन ज़रूर आप लोगों से बात करें. टेक्स्ट पे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, राइट. If possible, just get on a phone call or a Zoom call or in person.
अगर आप ईस्टर्न इलिनॉय में है, आई एम श्योर दैट पीपल इन शिकागो, आई डोंट नो हाउ फार यू आर फ्रॉम शिकागो, बट अगर कोई नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, उसमें आप शामिल हो जाएं, लोगों से मिलें। जब जब लोगों से मिलते हैं देन यू गेट टू आस्क क्वेश्चंस, और आपकी जो झिझक है वो दूर हो जाती है। दैट्स वन मैकेनिज्म। सेकंड, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एनीवेयर, सी इफ यू कैन एक्चुअली गो अटेंड दैम। एंड कई सारी जो है फ्री कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सम आर पेड, सम आर एक्सपेंसिव। When you go to these conferences, you get to actually meet people and talk to them in person, even if you don't know them. And अक्सर होता क्या है कि these conferences lead to somebody might say, "Oh, I'm actually hiring for my team," and it gives you an opportunity to like share your resume and your LinkedIn profile or whatever. So those are the two things that I would highly recommend. And third is projects. मैंने कहा, and I would highly encourage you to all of you to do group projects. उसमें जो है हम जो है एक दूसरे से सीखते हैं, right? And we can actually build things much faster. वरना होता क्या है कि अगर बंदा अकेला काम करे ना, तो मोटिवेशन भी कम हो जाता है, right? You're not as motivated because you're just sitting in behind a desk and working continuously. And you tend to also then get a little bored with stuff that you work on, even if it is interesting. And I've seen that with my own son as well. कि जो है कभी कभार he just slows down because he's just trying to work things by himself. So hope it helped, Zubair. Yes, sir. Thank you. Definitely You're helps. welcome. Dr. Ikra. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum salam ji. Sir, I have a question regarding social media. As you said, your wife was talking about vacation and after some time वो appear होने लग गया social media पर उसके बारे में। So exactly यही होता है हमारे साथ भी। हम कोई प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं अभी कि हम कोई बैग लेना चाहते हैं या कोई परफ्यूम, तो वही कुछ हमारे फीड पर आने लग जाता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ स्कैरी। और हाउ डू वी कंट्रोल दीज एप्स एंड मतलब हमें ये कंट्रोल कर रहे हैं जबकि हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए। I think we are a part of a matrix. The least I could do was to uninstall these apps और ताकि ये हमें कंट्रोल ना करें। But still, I think that I am also these are holding me back from many opportunities like networking and connecting to the world. So इट डजंट सिट राइट विद मी। मैंने फेसबुक को डिलीट किए हुए कोई 4 से 5 साल हो गए, मैंने नहीं यूज़ किया, और भी सोशल मीडिया ऐप्स में नहीं यूज़ करी। इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ। अभी फिलहाल मैं लिंक्डइन यूज़ कर रही हूँ। स्टिल आई एम नॉट रियली एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। सो इट डजंट सिट राइट विद मी, आई डोंट नो बट आई जस्ट डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय दीज एप्स। जी अब इसको हम कैसे बैलेंस करें कि हमें भी नुकसान ना हो और हम हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो कि हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, हम इन एप्स को कंट्रोल कर रहे हैं। And it's a tough question. Somebody commented in the chat के जो है if you are not buying the product, you are the product. Whoever said that, absolutely correct. मैंने जो है मैंने 4 साल काम किए मेटा में, फेसबुक में, but 2 years ago I made the decision to delete all apps from my phone. uh, Facebook and LinkedIn, sorry, Facebook and Instagram, WhatsApp अभी भी use करता हूँ. But it's a matter of discipline. I mean, so sometimes what we do is when as a family we sit and talk, we keeps our phone in the other room. Right? There's no need for that phone to exist in the middle of the conversation. Um, your phone sitting there is the equivalent of आप बैठे हुए हैं, कोई जो है कोई अनजान आदमी जो है आपके महफिल में बैठा हुआ है एंड सुन रहा है सब कुछ, राइट? इन फिजिकल वर्ल्ड वी डोंट एक्सेप्ट इट. तो देन द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट in the digital world.
yes, it's difficult, but it's also a matter of discipline, right? We have to really ask ourselves, like what is the need for this in any given tools की utility there's no doubt about it, and apps की utility like WhatsApp. I mean, I call my mother in India, and WhatsApp is the mechanism through which I talk to her every single day. So these are here to stay. They won't go away, but it's a matter of us sort of finding the right discipline as to when we need it. फैसल भाई, good point कि जो है Muslim tube, in fact, those will have the exact same problems that Facebook and Instagram have. Right? To me, we have to ask ourselves, do we really need them? Right? And we use them on a need basis as opposed to them controlling us, as Dr. Ikra said. It's not an easy problem, it's a hard problem. Um, uh, and अपने बच्चों को जो है we cannot control what apps they put on their devices. We can tell them what to do, but we certainly cannot. And if as parents we don't have discipline, how do we expect our children to have any discipline at all? तो अगर अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे टिकटॉक या जो भी ऐप्स हैं उस पे जो है टाइम स्पेंड ना करें, then we have to show them कि जो है we are not spending any more time on them, so they also can then follow. But if we are not disciplined, then we cannot expect our children to be disciplined either. Kiran? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam जी. Sir, I am not from a tech background. मेरा टेक प्रोफेशन नहीं है, मैं फार्मेसी से हूँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट से। तो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर मैं अप टू डेट रहना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन हमारी ज़्यादातर थ्योरेटिकल फील्ड है और पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट इतना इन नहीं है। इसीलिए आज तक तो कोई पेटेंट हमसे, मतलब हमने कोई ड्रग नहीं इंट्रोड्यूस करवाई मार्केट के अंदर। तो इसके बावजूद अगर मैं टेक को अपनी सीवी के अंदर, रेज्यूमे के अंदर शो कराना चाहती हूँ, तो मुझे क्या स्किल्स लेनी चाहिए? लाइक मैंने अभी मतलब कोइंसिडेंटली मैंने ये लिया था, ये सेशन लिया है। मैंने आपको बहुत कोऑपरेटिव पाया, लाइक यू वर आंसरिंग द क्वेश्चन इन सच अ गुड वे। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आपसे सवाल करूँ, ऑल्दो आई एम such a shy person that I don't ask questions to anyone. जी. It's a field that I'm not familiar with, but in tech tech ज़रूरी है. I mean, a good example is एक ज़माना ये था कि जो है कार्स जो है स्टिक शिफ्ट हुआ करती थी, राइट? एवरीबडी हैड टू लर्न how to like maintain a car. And now our expectation is कि जो है you just need to know how to drive, as long as you know how to like operate the car so the reason why I bring that example, Kiran, is कि जो है technology becomes sort of the underlying uh, uh, platform for a whole lot of decision making in any field. So I don't have any specific examples to sort of any specific guidance to give you, but the modern tools like ChatGPT have become an essential tool in sort of understanding any given person's field. So the way I'm just sort of I'm brainstorming with you in real time. One way to sort of augment your sort of science skills is um, yeah, if you have to sort of understand adjacent sciences to your own field, then how to use tools like ChatGPT or Claude, जो भी I'm sure there's more in like that are better suited for natural sciences. Um, knowing how to use them to
like get the right answers for things becomes an essential skill to have. We can take the approach के जो है these AI tools are here to like take away jobs and stuff like that, but these tools are here to stay. The question then becomes, how effectively can you use these tools, right? What's the right way to prompt when you're looking for an answer? What that does is that it makes you more productive in your field, in my opinion. I don't know if it answered your question, Kiran. जज़ाकल्लाह सर। Oh, yeah. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का है और मेरी डिग्री एंड होने वाली है, मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन अभी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसी के रिलेटेड था, जैसे कि आप डिवाइसेस की बात कर रहे थे और ऐप्स की। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम लोगों को इसके ऊपर अवेयरनेस दे के कोई नया ऐप नहीं डेवलप कर सकते जहाँ से लोगों का डाटा ब्रीच ना हो, जो कि क्योंकि ऑल्दो सब लोग कॉन्शियसली नहीं इन चीज़ों को रीड करते। इवन आई एम लाइक एजुकेटेड, लेकिन मुझे भी इस चीज़ का अभी आइडिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस फैला के एक स्टार्टअप ला सकते हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि जो है एक और स्टार्टअप लाइक अवेयरनेस की बात नहीं है, ये जो है ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, नहीं? We have to, and this is nothing to do with like technology, right? This is about self-control and self-discipline. um, the same challenge we have in uh, नमाज का वक्त होता है, how many of us actually do our prayers on time, right? Very few of us. I struggle with trying to pray कि जो जोहर का वक्त शुरू हुआ, राइट, ये मीटिंग आ गई, वो मीटिंग आ गई, पता चला कि जो है 3 बज गए हैं, राइट? तो वी हैव टू रश टू गो प्रे जोहर। द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग is कि जो है this is the essence of the problem is शैतान का वसवसा ऐसा है कि जो है ही शैतान इज constantly distracting you. The modern apps is just another distraction. Right? They are just, it happens to be your mobile phone, but distractions हमेशा से रहे हैं. This is just another distraction, and the question is, are we conscious of the fact that there are distractions around us, and can we actually stay away from those distractions? Right? पहले जो है पहले होता है कि ये दोस्त का फोन हो गया, वो दोस्त का पता चला कि ये 1.5 घंटा निकल गया किसी से बात करने में, राइट? नाउ, राइट, नाउ the phone makes us go lonely, right? पहले एटलीस्ट वी टॉक टू अदर पीपल, बट उसमें मसला ये था कि जो है इसकी गीबत हो गई, उसकी गीबत हो गई, we were all committed. Now like the phone, makes you like be singularly focused. The problem is much worse. The question is, can we actually put our phone away and focus on, right? कोई किताब उठा के पढ़ ली, या जो है 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ली, things that you can do to actually keep yourself focused and not get distracted. To me, the problem is not about tech. The problem is about staying focused, and there's no easy way to answer it, right? I mean, the word insan literally means forgetful in Arabic, right? We are by nature forgetful people, and shaitan has always found ways to actually distract us, and it's on us to actually keep it away. And आप किसी की तरह का प्रोग्राम बनाएं एंड अवेयरनेस लाने की कोशिश करें, दोज आर ऑल टेम्पररी सॉल्यूशंस इन माय ओपिनियन। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर एज यू सेड के
आप व्हाट्सएप ना चाहते हुए भी आपको यूज करना पड़ता है आपकी मदर से कनेक्ट करने के लिए। सो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई गॉट द स्टार्टअप आइडिया कि लोगों को ना चाहते हुए भी यूज करना पड़ता है। आपका जितना भी सेल्फ कंट्रोल हो, आपकी एक नीड बन चुकी है, आपको उसको फुल करना पड़ता है। तो दैट वाज माय पॉइंट एक्चुअली, बट यू क्लैरिफाइड इट वेरी वेल। थैंक यू सर। सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है जी। कि अगर बिजनेस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो जब मार्केट में जाते हैं तो उनको आजकल क्योंकि टेक में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, तो इतना लाइक काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है उनको फील्ड्स के लिए आगे फर्दर। तो मेरा बैकग्राउंड तो बिजनेस में है, लेकिन मैं फर्दर टेक में स्विच करना चाहती हूँ एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। बेसिक नॉलेज भी है कंप्यूटर का एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई होप टू इंशाल्लाह गेट इन वन ऑफ द बिग कंपनीज। मेरा ये विजन है और मिशन है फ्यूचर के लिए। सर एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव एनी बिजनेस ग्रेजुएट? और सर मेरा दूसरा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी क्रिएटिव। मुझे बहुत आइडियाज़ आते हैं इवन गूगल रिलेटेड एंड आई हैव सर्च देम ऑल एंड बहुत बहुत बिग आइडियाज़ आते हैं। तो एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव ऑन दैट? You can use technology to convert one of your big ideas. Let's say आपको कोई जो है ऐप का आइडिया आया, right? Modern tools, जैसे Replit for example, you can with the right amount of with the right kind of prompting to Replit, you can create your own mobile app for example, right? आपको कोई आइडिया कि जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, and the future of even of businesses के जो है, do you do you know how to use these tools, right? I'll give you a concrete example. Recently पता चला कि जो है जैसे product management, a lot of people go like study business from like a top school and bachelor's in business administration किया या MBA किया, and then you want to go become a product manager at a company. पहले प्रोडक्ट मैनेजर्स की इंटरव्यूज ऐसे हुआ करती थी कि जो है दे वुड बी गिवन a set of questions and see how they answer the questions on like creating a product. Abhi startups in Silicon Valley, and I've heard at least two examples recently where product management interviews have shifted to, uh, can you create an app using Replit? राइट, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको एक प्रोडक्ट आइडिया दे दिया, शो अस हाउ यू कैन एक्चुअली बिल्ड द प्रोडक्ट। एंड रेप्लिट करता क्या है कि आप उसको प्रॉम्प्ट दें एंड इट विल क्रिएट the mobile app, the back end, and everything, and it actually compile and show the app to you. So it goes to show how the industry is shifting in terms of how they see non-technical ideas that now use technology. Um, my recommendation to you is to think about using some of those tools, and there's plenty of documentation online to actually learn how these tools work. They are intended for a non-technical user to create apps. This is just an example, but आपकी जो core understanding है business fundamentals की, don't lose that. But at the same time, you need to augment that with these new technology advancements. Sure, sir. Thank you so much. You're welcome. Waqas? Hello, sir. How are you? Good, ji, alhamdulillah. Sir, my little brother, like my younger brother, Muhammad Haris, they gave me a link for join this community. So I am currently at France for master study VBORD University of Bourgogne. So here is I'm on study for M1. So I want to learn in USA for M2. So this is possible for me. आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे। What's your सर question? इस लिंक का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले आपसे क्वेश्चन हो जाए तो वकास बाद में बात करते हैं। Okay. ठीक है? Okay, sir. ठीक है, तो आई एम अराउंड। साबिर? हेलो सर। हाँ जी। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जस्ट बिफोर यू सेड के
जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल एप्स हमारे मोबाइल्स में इंस्टॉल्ड होते हैं, तो थर्ड पर्सन हमें सुन रहा होता है। तो अगर हम ये एप्स डिलीट कर कर दें और फिर भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, क्या फिर भी वो सुन रहा होता है? नहीं या इसके अलावा अगर हम मोबाइल से इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें तो उसके बाद कोई कंट्रोल कर सकता है हमें, या हम कैमरास वगैरह या ये चीजें कुछ रिकॉर्ड होती हैं शायद? नहीं 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 होती। once you delete apps, then there's no connection. बट रियलिटी ये है कि जो है आप अपने फ़ोन को आप इंटरनेट से आजकल कनेक्ट ही नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। योर फोन विल नॉट वर्क, there's nothing on ये the phone। तो इंटरनेट जो है ज़रूरी चीज़ है। आई एम श्योर टेलीफोन जब इन्वेंट हुआ था आज से 100 साल पहले, आई एम श्योर यही सवाल हुआ होगा कि जो है आप किसी से बात करना है तो आप मिलते क्यों नहीं लोगों से, आप फ़ोन पे क्यों बात करते हो किसी से, राइट? आई एम श्योर ये सवाल तब भी वो आया होगा। एग्जैक्टली। बट टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे, राइट। पहले लोग जो है खत लिखते थे पहले, जो है दे वुड डॉक्यूमेंट्स, कंपनीज में जो है दे वुड हैंड डिलीवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, राइट, और वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद फैक्स मशीन आ गई, आपने जो किसी को फैक्स भेज दिया तो दैट वाज अ डिसरप्शन। इंटरनेट इज अ सिमिलर डिसरप्शन, इट्स हियर टू स्टे। इंटरनेट के फायदे हैं, right, उसकी उसके नुकसान भी हैं। So we just have to know how to use it for our needs, and where we stay away from. Right. A good way to sort of look at this, and just general advice to everybody, किसी भी चीज़ का जो है फायदे और नुकसान से जो उसको जो है मेजर करें, उसमें फ़ायदा है तो जो उसको यूज़ करें, अगर कोई नुकसानदेह है तो इसको छोड़ दें। अनदर गुड एग्जांपल इज चेस। चेस का जो गेम है, शतरंज, सम इस्लामिक स्कॉलर्स है कि जो है चेस इज एक्चुअली हराम, राइट, बट सम स्कॉलर्स है कि चेस इज एक्चुअली गुड, एंड बोथ हैव देयर ओन ओन अंडरस्टैंडिंग, राइट। चेस इसीलिए जो मना किया गया क्योंकि चेस आपको इतना सोचना पड़ता है चेस के लिए कि नमाज का वक्त, मगरिब का वक्त चला गया, उनको पता भी नहीं चला कि ये मगरिब का वक्त खत्म हो चुका है। एंड इट हैज हैपेंड टू मी पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली गिविंग यू एन एग्जांपल। किसी के साथ मैं चेस खेल रहा था, आज से 30 साल पहले की बात है। इतने मशगूल हो गए चेस खेलने में कि जो है मगरिब का वक्त चला गया, पता भी नहीं चला कि मगरिब चला गया। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग कि जो है शैतान का वसवसा ऐसा कि जो ही इज एक्चुअली लुकिंग कॉन्स्टेंटली एज टू लाइक हाउ टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो एवरी पर्सन हैज़ टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि जो है किस तरह अपने आप को जो है डिसिप्लिन रखें। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। You're welcome. टाइम चेक, मुस्कान, कब तक कंटिन्यू करना है इस सेशन को? एग्जैक्टली सर, मैं यही इंटरप्ट करने लगी थी कि सर ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए। तो जी सर थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत हाँ, अमेजिंग नहीं, वेबिनार आई था। कैन आंसर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। तीन लोग। श्योर सर। सर इमरान शब्बीर सर, आप अपना क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं एक प्रोग्रामर हूँ बाय प्रोफेशन, और आई हैव स्पेंट 7 to 8 years in industry in जी different stacks. Now I have taken a transition towards data science. जी डेटा साइंस में मेरे लिए हर्डल्स ये आ रही हैं, मतलब मैं लीगल सिस्टम्स के ऊपर सर्च करना चाह रहा था कि कोर्ट सिस्टम के अंदर डिसीजन मेकिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ट्रेन मॉडल्स। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करने के लिए देयर आर plethora of rules and regulations. On the second note, I have tried to achieve the healthcare sector, and I met with the same fate. Reluctantly, I have tried to explore some other sectors as well, but all the efforts ended in snow as well. यानी मेरे लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती जा रही है वो डेटा है, जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके कुछ अपने एनालिसिस या कुछ प्रेडिक्शन दे सकूं, जिसके मेरे पास बिजनेस लॉजिक मौजूद है। लेकिन उसके लिए मेरे पास रियल डेटा चाहिए कि अगर बाकी जो प्लेटफॉर्म है गूगल या तरह तरह का डेटा पड़ा हुआ, दैट डाटा इज एक्चुअली नॉट यूजफुल फॉर मी। तो
इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करें, whether I have to switch to data science field again to my existing coding field, or what are the feasible solution to handle the situation? जी, दिस टफ क्वेश्चन टू आंसर, बट अगर आप डेटा साइंसेस में जाना चाहते हैं, reasonable projects are important, and one of the challenges in that field is that theoretical understanding of the area is not enough. Um, the only suggestion I have is कि जो है find an interesting problem to solve, and then stick to like one platform, या तो Google हो गया या AWS. So just pick one platform and go implement things. One way to sort of think about it, आपने healthcare mention किया. Talk to healthcare professionals कि जो है किस तरह की problems हैं and how data can actually solve them. Um, and for data scientists to for the professional for you to be impactful in the data sciences profession, you have to look for like reasonable problems to solve in the space. And my recommendation would be ऐसी फील्ड है कि जो है डोमेन एक्सपर्ट्स से जो है इंफॉर्मेशन लेना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स डेटा से सॉल्व हो सकती हैं. दैट विल हेल्प यू इंशाल्लाह. और मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, I have spent 4 to 5 years with legal sector as well, so I have deep knowledge about the जी judicial system, the judges, the lawyers, but I am unable to reach the relevant data. मेरे लिए थोड़ा हाँ, challenge है। data is a challenge because data in most companies is private and good. But I since I don't work on data sciences, but I heard कि जो है in the public domain there are large data sets for each field. And look out, see if you can actually find those data sets and use them for आपने कोई कोड लिखा है and if you want to sort of